मैसेज है, इस तरह की जो बातें हैं, ये अनौपचारिक माहौल को आप किस तरह से भांप पा रहे हैं इस फ्रेंडली एनवायरनमेंट को? क्योंकि ये जो तस्वीर है, जी जी, जो मेक्सिको की स्पीकर हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी है कल, और अभी हमारे संवाददाता ने अभी उनसे बात भी की जब वो अंदर जा रही थी हॉल में, तो बड़ी अच्छा महसूस कर रही थी। हालांकि वो अपनी भाषा में बोल रही थी, तो उसका जो इंटरप्रेटर ने जो कहा कि उन्होंने कहा कि वो बहुत गर्व महसूस कर रही हैं, और मेरे मेरे भाई, उन्होंने भाई मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को भाई कह के संबोधित किया वहाँ पे। तो वो इमोशनल भी थी उस विषय को लेकर। तो ये जब ये जो सारी चीजें देशों के स्पीकर्स आते हैं और ऑफिशियल लेवल पे सारी चीजें होती, पर जब ये पर्सनल टच उसमें जुड़ जाता है रामवीर जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो लीडर्स के बीच में जो कनेक्ट है, वो दोनों देशों के बीच में हो, चाहे G20 जितने भी सारे मेंबर्स हों। कल जब मोदी जी सभी लोगों से मिल रहे थे, यहाँ पे जो स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स आ गए थे, उनके बीच में उत्साह में देख रहा था, क्योंकि मैं वहीं पे मौजूद था। तो मोदी जी से मिलने की जो इच्छा उनके बीच में थी, क्योंकि वर्ल्ड लीडर के तौर पे जाने जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके उन G20 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो बड़े गर्मजोशी से उनके साथ मिलते हैं, पर्सनल कनेक्ट बनाते हैं, और यही कनेक्ट ये तस्वीरों में भी हमें दिख रहा है। और अभी जो सेशन चल रहा है, उसमें भी इस विषय पर गंभीर चर्चा हो रही है। रामवीर जी। Absolutely. So the first thematic session is about to begin. Lok Sabha Speaker Om Birla will deliver the inaugural address in a short while from now. So we will go back live to Yashobhumi when that address begins. But the first thematic session today is about mainstreaming gender discussions from women's empowerment to women-led development. That's the topic that we will be discussing. That's something that the parliamentarians there are also deliberating upon, and we will also be discussing with the esteemed panelists who are joining us on the program. I'm delighted to welcome in the studio Ms. Swasti Rao, Associate Fellow, Manohar Parikar Institute for Defence and Security Analysis, and Dr. Nupur Tiwari, Professor IIPA. Thank you to both of you for joining us on the program. To begin with, Dr. Rao, how do you look at this concept of women-led development? We were still, until a few months ago, talking about how to empower women. Now we are talking about women-led development. Right. How distinct is that concept, and how has it resonated globally, especially among the G20? Right. So first of all, let me congratulate all the women, and I think to the Prime Minister for taking this wonderful initiative. Okay, and like you said, women-led development. So of course, this is a paradigm shift, because so far, whenever we've been talking about anything to do with women empowerment, women have been at the receiving end of those benefits, right? So it's women being the beneficiaries of the policies that are women-friendly, etc., etc. So that was how the discourse was set for all these decades, not years. And now we see a paradigm shift which is coming from the current dispensation, which says it very, very clearly that it's not only an empowerment of women, okay, but it is going to be a change or transformation where it will be women-led. So this definitely is a paradigm shift. So in that sense, as an analyst, as a scholar, I would say that this kind of a paradigm shift will bring about a new kind of analytics, a new kind of hermeneutics, a new kind of heuristics to understand, you know, better grassroots development. B, it is going to make women far more, you know, into, that process, and I think that is going to bring about a qualitative change. And the third thing and the last thing is that, you know, this P20 focusing on women-led development through the Parliamentary 20, which is the Parliament 20, is again something which is very important, because you see, G20 is older, P20 isn't really that old. P20 started only in Canada in 2010, and this is just the 9th P20 summit. So at the 9th P20 summit, when India is anyway, heading this historic G20, and, you know, we have been all talking about all the major achievements under India's, so to say, presidency, all the, so to say, the voice of the global south and those kind of pitches that the Prime Minister has been, forwarding. But now, to ensure that women-led development is not something that kind of fades away, but actually continues to the other troika. So right now we are in a troika with, Indonesia, India and Brazil. And now this troika will shift, and it will be India, Brazil and South Africa. So this women-led development becoming a core agenda for the P20 means that this is continuing. We'll continue talking about how relevant is it and how it's going to build up in the times to come. But let's go back to Yashobhumi, where Lok Sabha Speaker Om Birla is delivering the inaugural address. सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हमारा संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र रहा है। भारत की नई संसद भवन में विशेष सत्र में
भारत की संसद ने संविधान संशोधन करके केंद्र और राज्य की सभी चुनी प्रतिनिधि संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। वो निर्णय भी सभी दलों की सहमति से लिया गया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी निर्णयों में, कानून बनाने में। इसी तरीके से भारत के लोकतंत्र की सबसे छोटी लेकिन महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत में भी भारत में आरक्षण है और नगरीय क्षेत्र की नगर पालिकाओं, नगर निगम में भी महिलाओं के लिए कई राज्यों में 33%, कई राज्यों में 50% आरक्षण है, जिससे लोकतंत्र की सभी संस्थाओं के अंदर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रहे। इसी प्रकार महिलाओं के वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही है। हमारा लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण है जहां महिलाओं को समानता नहीं बल्कि समाज के सभी आयामों में नेतृत्व के सभी अवसर और अधिकार प्राप्त हो। मुझे आशा है विश्व की सभी संसदों में इस दिशा में सकारात्मक काम किए हैं, उन पर हम यहाँ चर्चा करेंगे और अपने अपने देश के अंदर जो महिलाओं के लिए हमने लैंगिक समानता, महिलाओं के विकास और नेतृत्व के अंदर संसदों के अंदर जो अच्छी प्रैक्टिसेज हैं, वहां के अच्छे अनुभव हैं, वहां का महिलाओं में जो अच्छा योगदान है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे और अपने अपने अनुभवों को यहाँ पर शेयर करेंगे। मुझे आशा है हम सब मिलकर वैश्विक स्तर पर महिलाओं के अधिकार और नेतृत्व को एक नई दिशा देंगे। इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करने के लिए मैं सभी माननीय स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सीनेट चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन को आग्रह करता हूं कि वह सभी अपने मुख्य भाषण को 7 मिनट में समाप्त करें, ऐसा मेरा सभी से आग्रह है। अब मैं डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा अपर हाउस हरवंशी से आग्रह करूंगा कि वह सभा का संचालन करे। Thank you, sir. So now we are having this third discussion, one family mainstreaming gender equality from women's development to women-led development. And as Honorable Speaker has informed, the keynote speakers will present their views. Each keynote speaker will address us for a duration of 7 minutes. So now I'll invite Her Excellency Ms. Sue Lyons, President of the Senate, Australia, for her keynote address. Thank you very much, and good morning to everyone. First of all, thank you very much for a wonderful evening last night. And if there was any doubt at all that India doesn't take its democracy seriously, well, they would have been convinced last night at the beautiful new Parliament building. All right, so the thematic session on women-led development has begun. You heard the Lok Sabha Speaker talk about some of the efforts that India has undertaken in recent months, specifically the Women's Reservation Bill, which provides 33% reservation to women in Parliament, in all the state legislatures, something that indicates that India does not just preach, it walks the talk. So something that will be an example for the other countries to follow in the times to come. Dr. Tiwari, your views on the concept of women-led development, also the fact that how do you see some of these efforts that have been undertaken by India in recent months, strengthening the mantra that we are trying to propagate to the rest of the world, that the world can't progress without women? Absolutely. As you said, women-led development, and there was also some talk on that. What we are emphasizing right now is not only development for the women,
by maybe the initiative could be taken by a man, but rather the initiative to be taken by a woman, because she knows the women goods and women related goods better. So if a woman leads a women's development, the basic community that is coming up will be, the women led community will be in a way better. So this is the basic underline. But of late, number of initiatives have been taken. One, I could say the Women Reservation Act, that is a tremendous work and also is highly progressive, and it is highly, going to take a good shape after 27 years of complete wait. And the fight was almost 30 years. Now it has taken a shape where 33% of the women will be now at the highest level of the decision making. Now this, as you know, women is not a homogeneous group. There are many layers of it. And very recently, the Nobel laureate, the lady, the economist, Professor Claudia Goldin, also said that women's representation in the economic growth has not been projected, or women's development trajectory has not been shown as it should have been. So she informed that women in informal workforce, where women are involved with their husband in like care services or in agriculture or in other like dairy work or in textile or these kind of things are not projected well. So all the census and the data set that is there in the public domain can be, according to her, could be erroneous. So 50% of the population involved in this growth trajectory has not been projected as it should be. बिल्कुल। हम थोड़ा सा इस बात को और आगे बढ़ाएं स्वास्थी राव। वर्ल्ड बैंक की जब रिपोर्ट आई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर जब ये मामला आया और वहाँ पर रिपोर्ट पेश की गई, तो समझ में ये आया कि महिला और पुरुष के बीच में जो अंतर है, इस अंतर को पाटने में औसत तो 100 साल लगेंगे और कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें ये और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है जी। जैसे भारत में प्रधानमंत्री ने कल कहा कि हमारे यहाँ पर, उन्होंने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर के बात कही कि हमारे यहाँ 3 मिलियन से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं सिस्टम में। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक फोरम पर बात करें तो वो कहते हैं कि 257 साल लगेंगे महिलाओं को पुरुषों के बराबर आने में इकोनॉमिकली। लेकिन अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो केवल 95 साल में महिलाएं और पुरुष राजनीतिक रूप से बराबर स्तर पर आ सकती हैं, आ जाएंगी, जो ट्रेंड चल रहा है। ये क्यों है? क्या इसलिए कि चूंकि महिलाएं भी एक वोट हैं और वोट सबका बराबर है और कहीं ना कहीं फिर वो उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पा रही हैं? बहुत ही दिलचस्प सवाल है और एक ये ऐसा सवाल है जो हम लोग आई थिंक बहुत दिनों से जो विमेन जो विमर्श है ना, जो जिसको हम कहते हैं कि क्या है, जो स्त्री शक्ति का विमर्श है, हाँ। तो स्त्री शक्ति के विमर्श का एक केंद्रीय सवाल है वो ये कि एक चीज होती है कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं प्रोसीजरल चेंज और एक होता है जिसको कहते हैं सब्सटैंटिव चेंज। तो आंकड़ों के अनुसार अगर आप देखेंगे, जो आपने पॉलिटिकल रेल्म की बात करी, तो हमें मालूम है कि हमारे देश में हमारा इतनी पुरानी लोकतंत्र है हमारा, तो लेकिन प्रोसीजरली हम बहुत सशक्त हैं क्योंकि बड़े नंबर में लोग जाके वोट देते हैं और पंचायत के सिस्टम के अनुसार आप देखेंगे कि गाँव तक आप देखेंगे कि लोग वोट देते हैं। लेकिन वो सब्सटैंटिव कितना है, सब्सटैंटिव का मतलब उसमें एक्चुअली तत्व कितना है, उसमें सब्सटेंस कितना है, इफेक्टिव। तो उसको बनाने के लिए हम देखते हैं कि कितनी बार हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स आते हैं कि है तो वो वुमन, है तो वो महिला जो सरपंच है या कुछ है, लेकिन वो किसी दबंग परिवार हम मानते हैं स्वास्थ्य या ऐसा है, हम मानते हैं कि ये हमारा आगाज है, लेकिन इस प्रोसीजर में महिलाएं जो हैं वो अपने मतलब वो उसमें रोल भी निभाना शुरू कर दिया है उन्होंने। जब ये सब शुरू हुआ था तब ये उदाहरण ज्यादा आते थे, अब धीरे धीरे ये कम होगा और कम होगा जी। और जब लड़कियां आएंगी, पढ़ी लिखी लड़कियां उस सिस्टम में आएंगी तो शायद वो अपना जो स्टेक है उसको ज्यादा। that difference we've already begun to see how women have shifted from just being beneficiaries to now playing the major role as equal participants, as leaders in various fields. That is the change that we would like to see, of course, gradually in the times to come. Let me get in Mr. Manish Dabhade, Assistant Professor, School of International Studies. He joins us virtually. Mr. Dabhade, thank you for your time. Welcome to the program.
You must have heard, we've been talking about the concept of women-led development, something that India has been propagating. It's resonated well among G20. It found place in the G20 New Delhi Leaders Declaration, and the thematic session is currently underway at the P20 summit at Yashobhumi as well. Tell us about your views on the multiplier effect that the concept of women-led development will have for countries like India, for other countries in the global south. Most of them are developing economies. How do you see women shifting from the role of beneficiaries to primarily taking the role in decision-making, in planning? Please understand that this is really about Parliamentary 20, and what exactly is Parliamentary 20 forum, the summit which we are seeing right now. I mean, it is very clear that it is really about parliamentary diplomacy, and it is really about the contributions of Parliament to the entire G20 process. Once we understand that, I think it is very important that in fact, like the earlier G20 summit, which was held in September, and this P20 summit, it is very clear that the India way is being highlighted. And what I mean by that is that, as was pointed out by earlier fellow panelists, that now we have moved, there is a paradigm shift in terms of the thinking. And I think that is very important, that earlier the language was really about Labhartis, about women as beneficiaries, and women development, but now it is women-led development. Look at the speeches, the keynote address given yesterday by Prime Minister, or even now by Speaker Om Birla. I think both of them really highlighted that India is in fact showing how this can be done. The Women's Reservation Bill, which was passed a couple of weeks ago, is a clear pointer to the world that India can, and India really thinks about one family, and also how these lessons of development, these lessons of women-led development, women-led leadership, women leadership, and their very active participation. Some numbers were also being talked about. That's a significant number, and I think the speakers who are coming here, who represent respective parliaments in their respective countries, I think they are carrying back the message that look at this example of India, where actually you are seeing a substantive change in terms of idea when you talk about women-led women-led development, and also looking at real actual substantive participation. And I think this is going to be a very transformational change of India's G20 presidency, and this message is going to be taken back to countries in the global south who are actually very much struggling, women groups there, women issues on development. I think these struggles are going to get a shot by looking at the example of India. I think that's a very major sort of, and look at also in fact the top 4 items which were identified for the P20 summit. One definitely includes this theme, special theme on women-led development. बिल्कुल हम यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, चीज़ें शुरू हुई हैं और अपने अंजाम की तरफ भी आगे बढ़ेंगी। यशोभूमि में हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट मालिनी से बात की। आइए सुनते हैं। हमारे साथ हैं मालिनी जी, जो कि पॉलिसी एडवाइज़र हैं, जो पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट हैं उनकी, और हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे जो भारत में अनुभव है। उससे पहले स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार। पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो P20 समिट जो इंडिया में हुई है इस बार, ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, और जिस तरीके के मुद्दे उठे हैं वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण? ये जो समिट चल रहा है, ये तो हमारे लिए और इंडिया के लिए बहुत स्पेशल है, G20 के लिए, क्योंकि ये अफ्रीकन यूनियन पहली बार वो मेंबर हो गई है G20 की, तो हमारे लिए तो ये तो हिस्ट्री बन गई है। जी बिल्कुल। एक और बात आपसे समझना चाहूँगा, फॉर्मल प्रोसीडिंग के अलावा अगर हम बात करें आपके अनुभव की, और जो चूँकि आप पैन अफ्रीका से जो प्रेसिडेंट आए हैं, साथ में जो डेलीगेशन है, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि कितना अपने आप में अलग है, ख़ास है ये भारत का एक्सपीरियंस। देखिए, मैं हिंदू ओरिजिन हूँ, हम मॉरिशस से हैं, लेकिन मैं पैन अफ्रीकन में काम करती हूँ, लेकिन मैं हिंदू हूँ,
तो हमारे जो कल्चर है, हमारे जो रीति निवाज है, तो सब यही हमारे मॉरिशस में जहाँ मैं रहती हूँ, घर हमारे घर है, वहाँ तो हम छोटा भारत कहते हैं हमारे इंडिया को। और हमारे लिए तो यहाँ तो हमारे लाइक दूसरा घर है। और जो हॉस्पिटैलिटी मिल रहे हैं पान अफ्रीकन के लिए, हमारे जो मेंबर्स आए हैं हमारे साथ, हमारे प्रेसिडेंट जी, एक्सेलेंसी, और जो बाकी एमएलएज आए हैं, वो तो यहाँ का जो स्वागत मिल रहे हैं, यहाँ का जो हॉस्पिटैलिटी है, ये बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। और मुझको धन्यवाद करना चाहती हूँ इंडियन गवर्नमेंट को, G20 मेंबर्स को, ये सब जो आप कर रहे हैं हमारे लिए। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो हम जैसे क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का एक ख़ास तरह का थ्रेट है अफ्रीका के लिए ख़ास तौर पर। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे हैं, ग्रीन एनर्जी जैसे मुद्दे हैं, SDG की बात है, और महिलाओं के जो वुमेन लेड डेवलपमेंट की जो बात है, अपने आप में जो यहाँ मुद्दे जो चर्चा हो रही है, जो इंटरेक्शन भी हुआ लोगों से, ये आप कितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं? देखिए, मैं अभी तो मैं पॉलिसी एडवाइज़र हूँ पान अफ्रीकन प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन मैं एक फॉर्मर MP हूँ मॉरिशस के पार्लियामेंट में। हमारे लिए ये क्लाइमेट चेंज जो है हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। और जो हम महिला हैं, हम तो रोज़ हमारे डेली लाइफ जो है, फैमिली को केयर रखने के लिए, हमारे सोसाइटी को, तो हमारे लिए बहुत 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 कंसर्न है और हमारे लिए बहुत स्पेशल है। तो आजकल जो यहाँ पर हो रहा है, हमारे इंटरेक्शन और महिलाओं के साथ, दूसरे कंट्रीज़ के साथ, वो मुझको बहुत अच्छा लग रहा है और मुझको शेयर भी करना आ रहे हैं, और ये जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मालिनी जी। नमस्ते। विद कैमरा पर्सन सरोज दास, नवविक्रम सिंह, संसद टीवी। और इसी दरमियान ये बात समझ में आती है, सारे अतिथि इस बात को बोल रहे हैं, और ये जाहिर है कि अतिथि देवो भव ये हमारे देश की, हमारी संस्कृति की परंपरा भी है, और ये उन्हें अनुभूत भी हो रहा है। इसी बीच हमारे संवाददाता नवविक्रम ने ही नाइजीरिया के संसद सदस्य सुलेमान गुमी से बात की। We have with us a member of parliament from Nigeria who is participating in P20 summit. Sir, welcome to Sansad TV and welcome to India. Thank you very much. Sir, my first question to you, can you briefly explain about P20 summit and about today's session on SDG especially? Yeah, thank you very much. Today's session was a very robust one. It was about Millennium Development Goals, which every country has a target to reach, and every country presented its own achievements and setbacks, and we shared ideas and so on and so forth. Sir, one more thing I would like to ask: how significant is Africa's and especially Nigeria's participation in P20 summit, and especially within India as a host? Yeah, well, this is the first time Pan-Africans are being invited for the G20 summit for the parliamentarians, the P20. I think it's a good development because Africa has a lot to offer, in the Committee of Nations, and this is giving the opportunity for Africans to be heard and to listen to what other countries are doing, So I think it's a good development. Okay. Sir, apart from formal proceeding in P20 summit, tell me something about your experience in India and especially about cultural aspects. Yeah, first of all, Delhi is a wonderful place. The moment you land, you know that India is in tune with nature. Everywhere is covered with vegetation, which is a wonderful thing. The air is very clean because of the presence of vegetation, which is something very remarkable.
you know, the Indian food is good. Well, you know, you have to get used to it, and you know, we Africans, we love meat, so and we've been on a vegetarian diet, which is a good thing because we know with just vegetables and you know, plants, you can have a good meal. So it's a good experience for us, and Indians are very hospitable people, and we are really happy to be here. My final question to you, back to P20 summit. How significant is, especially P20 summit, India as a host, and about SDG goals, green energy, climate change in discussion? How it is important for Africa as well? First of all, India is walking the talk. You know, what we are seeing is practicing environmental awareness, environmental protection awareness in you know, lively. You know, everything India is saying would do, we are seeing it live. The what do you call it? The nylon non-use of nylons, use of reusable things, the biodegradable items. This is all we have seen in India, and which is, I think, something for us to emulate. Not just talk, but action. Thanks for talking to us. With camera person Saroj Das, Navikram Singh, Sansad TV. Ram, interesting conversations there with Ms. Malini, the policy advisor of the Pan-African Parliament, and then with the Nigerian parliamentary delegate, Mr. Suleiman Gomi. It seems all our delegates who visited the new parliament building yesterday seem to be very impressed with the Indian parliamentary process and also India's hospitality. माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें नए संसद भवन का एक एक कोना जो दिखाया, और हर कोने को देख करके उन्होंने देखा कि लोकतंत्र के लिए यहाँ पर जो तैयारियाँ की गई हैं वो बहुत वाजिब हैं। हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने ही इस दौरान इंडोनेशिया के संसद सदस्य से भी बात की। क्या बात हुई है, आइए सुनते हैं। We have with us member of parliament from Indonesia. Sir, welcome to Sansad TV. Yeah. Sir, how do you perceive the significance of P20 summit, especially this year, India as a host? Actually, this is my first time I'm coming to India, and I got fascinating. Like everything in here is so different when I hear about the Indian, and the way how Indian government try to make a P20 this year is very, very good, because last year we held this event also in my country, Indonesia. And I think when in this moment, how like they pick up in the airport, how they manage everything, the LO, the event until today, it's very, very good. And also today when I saw one of your new building in behind me, the other side of me, the new parliament building, I was amazing, because how can India as one of big nation in 2.5 years they make a big building and very, very beautiful. I saw the plenary hall, it's very beautiful, and I believe it will inspire one of us, because we bring our speaker also, and we hope someday we still in this time we try to moving our capital city to the new one, and we're still trying to make our new parliamentary office too. So I believe in this moment, our speaker will see the office, and we will have some inspiration from India too. Sir, one more thing I would like to ask. Can you briefly explain about today's session, about SDG goal and green energy? What do you think about today's session especially? Today we have a lot of sessions from the morning until in the afternoon. And there's a lot of debate, a lot of argument, and I think I saw India play a big role in here. Like India is one of the biggest country in the world, and also one of the big economy in the world also, and they doing very well. Yeah, I hope we have a very, very good meeting, and we have a nice and good conclusion for tomorrow, because tomorrow we will hold one joint statement together. So next year, when we have another event, P20 in the next city, it will be more good and more better for the future. Okay, sir. Is there any message to share with our audience
what would it be? We, Indonesia, the one we have a lot of similar culture with India. We learn a lot from India. Like in instant, you become one of big economic country, and also you have a lot of astronauts that go to the moon. Yes. I believe that is some inspiration for us, Indonesia, in the ASEAN. How can we be as big as in Indian? Like in this year, you have one of the most population in the world. I think that's a lot of challenges. But when I saw how your Prime Minister they speak today in the P20, I believe all the problem in India, like the hunger, like everything, I believe they can solve it. Okay, sir. Okay. Thanks for talking to us. Thank With you. camera person Saroj Das, Navikram Singh, Sansad TV. बिल्कुल। और इंडोनेशिया जो है उसका भी मानना है, और अगर हम बात करें देश की तो देश लोगों से बनता है, और चूंकि हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, इस मायने में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र भी है इस मायने में। और इंडोनेशिया के तो एक राजदूत ने यह भी कहा था कि जिस तरह से भारत में पश्चिम की चकाचौंध बढ़ रही है, अगर वो भारतीय संस्कृति को भूल जाएं, भारत को भूल जाएं, तो वो इंडोनेशिया आकर के हम उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखेंगे और वो फिर से ठीक है उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसी दरमियान हम जो है फिर से यशोभूमि से जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र कुमार हमारे साथ हैं। सुरेंद्र, क्या आपने वहां देखा, आपका नजरिया क्या है पूरे के पूरे पिक्चर पर, बताइए। रामवीर, मैं सबसे पहले बता दूं, जिस तरह से G20 की सफलता के बाद अब P20 का आयोजन हो रहा है, सभी देश एक मत है। भारत का जिस तरह से सभी देशों ने स्वागत किया है उसके इस आयोजन को लेके, उसमें कोई दो राय नहीं है। सब इंडिया की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाल फिलहाल में जिस तरह से भारत ने महिला आबादी को लेके 33% रिजर्वेशन का बिल पास किया, उसको लेकर भी सभी दलों में, सभी देशों में इस तरह की एक्सेप्टेंस है। उसकी एक्सेप्टेंस है सबको लेके। ऐसे में आज भी जो बात हो रही है महिला डेवलपमेंट को लेके, लेकिन अब जो बात हो रही है, स्पीकर्स बोलना शुरू कर चुके हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया की सेनेट ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने भी महिलाओं के साथ जो ये अभी चल रहा है कार्यक्रम, उसमें अपनी उन्होंने बात रखी है। उन्होंने कहा है जिस तरह से एनवायरनमेंट का इशू है, वो सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर ही पड़ता है। वहीं महिलाओं की आबादी जो है 33% जो भारत ने बढ़ाई है, वो दुनिया के IPU के रेशियो से बढ़ चुकी है। वहीं मैक्सिको की बात करें, मैक्सिको में ये ऑलरेडी 50% के करीब है। हालांकि वहीं दूसरे देशों में ये आबादी का हिस्सा जो है महिलाओं की, वो काफ़ी कम है। और आज P20 की बात करें, जो तो कल जो आउटकम आया था इस मीटिंग को लेके, उस पर भी सभी दलों ने अपनी एकरूपता जताई है। ओम बिरला जी जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उनके नेतृत्व में जो P20 का जॉइंट स्टेटमेंट कल जारी हुआ है, उसमें सबने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की है। P20 में सभी देशों ने मिलकर SDG के लक्ष्यों को लेकर और महिला नेतृत्व में विकास को लेकर बात की है। जी बिल्कुल। बिल्कुल शुक्रिया। हम फिर वापस आएंगे आपके साथ बातचीत करने के लिए, और हमारे साथ स्वास्थी राव जुड़ी हुई हैं, बाकी मेहमान जुड़े हुए हैं। स्वास्थी, तुलसीदास ने एक बात बहुत पहले कही कि अर्थ प्रधान विश्व रचि राखा, और वो मैं उसे ऐसे समझ रहा हूं कि पैसे आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि अगर नंबर 1 की हम बात करें तो आइसलैंड नंबर 1 पर है लैंगिक समानता के मामले में। फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं जिनमें नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, और फिर और भी देश वहीं उधर आते हैं। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं, या इस पर कुछ और भी बोलना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है? देखिए, मेरी राय में इसमें कुछ मुद्दे हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। हम डेफिनेटली भारत जैसे जो लोकतांत्रिक हमारा जो बैकड्रॉप है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है हमारा, उसमें हम अपने को ये छोटे छोटे स्कैंडिनेवियन जो देश हैं उनसे तुलना केवल एक हद तक कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपैरेटिव एनालिसिस है ना, उसमें हमें ये देखना ज़रूरी है। सैंपल साइज तो छोटा होता है। सैंपल साइज बहुत छोटा है। उसके अलावा हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी ज़्यादा है, उनका कलोनियल एक्सपीरियंस। मैं भी यही कहा कि क्या उस इनकम पर कैपिटा इनकम की वजह से ही वो सब तरह की समानता आई है?
नहीं, ऐसा नहीं है, केवल पर कैपिटा इनकम की वजह से नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको उनके इतिहास को भी समझना है। वो हमारी तरह उनका कॉलोनियल इतिहास नहीं है। जिस तरह से हमने अपने देश में बंटवारे देखे हैं उस तरह से वहाँ नहीं देखे गए हैं। वो एक छोटी पॉपुलेशन है जहाँ पे गवर्नेंस हमारे से बेहतर है क्योंकि उनका सैम्पल साइज छोटा है। लेकिन इसके बावजूद भारत के पास जो सिविलाइजेशनल लेगेसी है वो उनके पास नहीं है उस तरह से। दूसरा, भारत के पास जो हिस्ट्री की रिच, मैं कहूँगी कि जो एक्सपीरियंशियल डिस्टिलेट भारत के पास है वो भी उनके पास नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इकोनॉमी का साइज जब बढ़ता है और पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो अपने आप बहुत सारे मसले हल होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम तुलना करते हैं और स्पेशली जब हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में तुलना करते हैं तो हमारे को सिमिलर और डिससिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना लेकिन कुछ भारत के सोशोलॉजिकल कैरेक्टर को जो समझते हैं वो लोग ये कहते हैं कि भाई अगर आपने ये लैंगिक समानता और आर्थिक समानता और बाकी सब पर आप गए और स्पेशली उनके मॉडल को आपने अडॉप्ट किया तो आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो फिर आप ठीक है उसे ऐसा नहीं रख सकते जैसा वो है। तो इसमें मैं आपको बहुत एक दिलचस्प बात बताती हूँ कि बेहतर होगा कि हम अपने आप को ऐसे स्कैंडिनेवियन देश जो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्टेज पर हैं उनसे तुलना करने के बजाय मतलब वहाँ से भी लें जो ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बताती हूँ कि मतलब ग्लोबल साउथ के डेवलपिंग देशों में भी ऐसे देशों का उदाहरण मौजूद है जिन्होंने पूरी फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी एंश्राइन करी है। और इसमें एक नाम जो सबसे ऊपर आता है वो मेक्सिको का आता है। और मेक्सिको की जो फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये नहीं कि सारे डिसीजंस महिलाएं लेंगी, वो डिसीजंस जो हैं वो सेंटर्ड होने चाहिए। तो उनके फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस जो हैं वो ऐसे 3 या 4 प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं जो इंश्योर करता है कि कोई भी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन अगर मेक्सिको लेता है तो उसमें महिलाओं की भागीदारी क्या होगी, उनके बेनिफिट्स क्या होंगे, उनकी भूमिका क्या होगी। तो चूंकि मेक्सिको भी एक ग्लोबल साउथ का देश है, G20 का मेंबर है, तो मुझे लगता है कि इस तरह से जब हम P20 पे कहीं पे मुलाकात करते हैं तो दिस ऑल्सो बिकम्स अ प्लेटफॉर्म फॉर हैविंग दीज कॉन्वर्सेशंस विद ईच अदर कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे ये एक्सपीरियंसेस हैं। और चूंकि इस वक्त जो G20 और उसके बाद P20 का जो फोकस है वो इतना ज़्यादा ग्लोबल साउथ पर है, तो मुझे लगता है कि ऐसी जो तुलनाएं हैं वो आपको एक बेहतर रिजल्ट also the fact that, since we're talking about societal landscape, I would like Dr. Tiwari to express her views on the fact that even though there have been efforts to promote women-led development, it will require an all societal approach. We can't just depend on the government to frame policies. So if we talk about that kind of churning within the society, what are the battles that we still need to find in terms of changing mindsets? Okay, so this is a very pertinent and important question that you're asking, that India still stands at 108 amongst the 149 for the global gender gap index. So this is quite a huge number. We had been giving lot of reservation policies are there, because your question I can answer if I relate to the panchayat system. We had 33%, we have 33% reservation. If you talk in numbers, well, of course, we have more than 1 million elected women representatives. That constitutes more than the whole of the world put together. This number is huge and it has generated critical mass. That means that there is a solidarity of purpose and all these women can do a women-led development or can do a lot of things where there is a, when we call a women, we call women specific goods. The things which are related to women, like if there is a sarpanch who is a woman, she will look into various things like education, she will look into health, she will look into women related aspects, and this has been proved empirically by various findings and various studies who have been done even by MITs and other places. But the point is that how far community involvement is there. So we are not just talking just as a fashionable way of saying that women they are doing well and there's such a large number. But of late it has been shown that in Gram Panchayat development plan, which is done with the help of society, even the society is coming up and they are making up the policies at the grassroots level where women are involved and the whole scenario is on specific to women. So once this kind of a scenario is developed, even earlier there was no concept like women in women goods or what are the women spaces and how a women can be involved in a decision making at the grassroots level. Right. So the
3 Gram Panchayat development plan have got the best prize at the grassroots level, which have been made by the women and with the help of course, the community, where the priorities or the women have been prioritized, which till now had been neglected. So I would say with the help of these affirmative actions and the community also changing vis-a-vis their own perception of what women is and why these special needs of women are important, this is going to show some We are good glad impact. at least what had been neglected for so long, Mr. Dabhare, has garnered mainstream attention. The fact that India's priorities, India's approaches on this matter have been endorsed by the G20. It was adopted in the G20 declaration. The P20 also, we are seeing consensus on the joint declaration, which will be announced today by the Lok Sabha Speaker, since he is the chair. But how do you look at it also converting into a whole of society approach? Ours is a huge country, huge population there, 50% women. So we can't, as I asked Dr. Tiwari, it can't be just a whole of government approach or just depending on the policies. It has to be a whole of society approach, so that narrative, that change in mindset needs to come and needs to come fast to attain the Vision 2047, wherein the Prime Minister sees women as leaders of that progress. No, absolutely right. And here I think the Prime Minister has played a very stellar role since 2014, since assuming office. And there is a very direct sort of understanding, a very direct sort of intervention at the highest level about ensuring that, in fact, please look at the government schemes. You have Ujjwala, you have Swachh Bharat. So women were at the center of these governance initiatives. I think that is a very important mindset change which you are talking about. Whole of society, obviously, but whole of government approach also. And in fact, in many schemes, in many policies, look at different Niti Aayog reports. Many of them, in fact, carry women as the center of attention, and how they can be, in fact, brought into the mainstream. In fact, that is the whole idea about the session today. And in fact, the Parliamentary 20 Summit statement, which was adopted, which was announced yesterday and which will be adopted today, I think makes it very clear that this paradigm shift has to be universally accepted and has to be worked upon. And that is the message, as I said, the different speakers, different deputy speakers have to carry back to their own countries and look at the India example. And ultimately, it really has boiled down to the leadership, the top leadership, how it sees that as a challenge, and how what sort of policy initiatives, including, for example, the Nari Shakti Adhyayan, I mean the Women's Reservation Bill. I think that has been extremely positive, sort of creating a very positive, not exactly vibe, but really in that sense a very substantive change in terms of actively getting, and this was pending for many decades, for at least 3 decades, and now we see that it has been passed unanimously by both houses. And I think that is the message that and in fact many of the guests you have been interviewing at the P20 summit have also categorically said that India has been walking the talk, that rather than just talking about world as one family, rather than talking about women-led development, India is in fact showing the way, actively pursuing such initiatives. बिल्कुल। हम सीधे यशोभूमि फिर एक बार चलते हैं, जहां पर यशोभूमि में इस बात को लेकर के मंथन हो रहा है कि देश की आबो हवा, दुनिया की धरती की आबो हवा कैसे ठीक रहे, दुनिया में आतंकवाद को कैसे ख़त्म किया जाए, और दुनिया में कैसे जो लोग हैं उनके बीच में समता, समानता और समरसता पैदा की जाए, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। और इसी बीच वहाँ पर महिलाओं को लेकर के, उनकी भूमिका को लेकर, उनके विकास को लेकर भी चिंतन मंथन चल रहा है। और इसी बीच नव विक्रम वहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नव विक्रम, क्या कुछ खास है फिलहाल? बिल्कुल रामवीर जी, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि ख़ास तौर पर आज जो महिलाओं से जुड़े विषय पर विचार मंथन होगा, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात होगी, जो कि ये सम्मेलन है P20 का। मैं आपको रामवीर जी बताना चाहूँगा, कल जिस तरीके से विजिट रही है भारतीय संसद में, जितने भी डेलीगेट्स आए हैं
वो अपने आप में बेहद अहम है। और डेलीगेशन में आए हुए जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो संसदीय प्रमुख हैं विभिन्न देशों के, सब ने भारतीय संसद में जो पहला कानून जो पारित हुआ महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ कि विधायिका में महिलाओं का आरक्षण हो, तो उसको सराहा। मेरी कई लोगों से भी बातचीत हुई जो डेलीगेशन में हैं, उन्होंने भारत के इस इनिशिएटिव को बेहद सराहना की। और इसके अलावा आज जिस तरीके से दूसरे सेशन में डिजिटल पर खास तौर पर चर्चा होगी, तो डिजिटल में भी जो हमारी संसद है एक तरह से हाईटेक प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित की गई है, जिसमें आधुनिकता और सांस्कृतिक विरासत का एक बेजोड़ संगम है। उसको भी यहाँ आए डेलीगेशन ने देखा और उस आधुनिक संसद भवन की को बारीकी से जाना। और उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ विशेष तौर पर, इसके अलावा जो वहाँ रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है, ये अपने आप में बेहद अहम है। तो रामवीर जी, अगर हम पूरे कल शाम के कार्यक्रम की बात करें तो वो एक तरह से कल्चरल एक्सचेंज हम उसे कह सकते हैं, और डिप्लोमेसी के लिहाज से कल्चरल एक्सचेंज अपने आप में बेहद अहम है। क्योंकि एक तरफ तो हम यहाँ सम्मेलन के दौरान तमाम अहम विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत की लोकतांत्रिक विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को, और पूरी सिर्फ विरासत को नहीं, पूरे जो भारत की यात्रा रही है 75 साल की संवैधानिक जो यात्रा रही है उसके बारे में भी। तो ये अभिभूत हैं जो भी यहाँ पर विदेशी मेहमान आए हुए हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, वो भारत के विक्रम, जैसा कि जाहिर तौर पर हम ये मानते हैं कि दुनिया जो है तकनीकी तौर पर तो एक ग्लोबल विलेज के रूप में ढल रही है, लेकिन उसे जो है जब इस तरह से लोग फिजिकली मिलते हैं, गेट टुगेदर होता है, तो जाहिर तौर पर तब चीज़ें जो हैं ज़्यादा वो पारिवारिक भाव तब ज़्यादा आता होगा, और ये देखने के लिए भी मिला। हम फिर से एक बार मंच की तरफ चलेंगे, और यहाँ पर स्वाति राव, एक जो जिज्ञासा थी जो मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा था कि ये जो समानता है, इसके असमानता के जो सूत्र हैं, जो टूल्स हैं, वो कहाँ पर छिपे हुए हैं। एक बात आर्थिक तौर पर हमने देखा, समझने की कोशिश की, क्या सामाजिक भी कोई नज़रिया है जिसे हम रख सकते हैं कि नहीं होगा पैसा तो भी अगर सामाजिक रूप से भी हम अगर मजबूत हैं तो वो एक दृष्टि हो सकती है जब हम बराबरी के स्तर पर हो सकते हैं। जैसे हम कुछ ट्राइब्स में सुनते हैं, देखते हैं, जहां पर मदर लीड सोसाइटी है, वुमेन लीड सोसाइटी है, मैट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है, तो वहां पर पैसा नहीं है उन लोगों के पास, परंतु वे असमान नहीं हैं, बल्कि थोड़ा सा आगे हैं, थोड़ा सा स्पेशल हैं। जी, देखिए, जब भी हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उसके डिस्कोर्सेस की बात करते हैं, तो जो एकेडमिक लिटरेचर है वो इस बात को संज्ञान में लेता है। एक चीज़ जो बार बार कही जाती है, जिसके बगैर आप किसी भी विमेन विमर्श को या जो विमेन जो डिस्कोर्स है उसको नहीं समझ सकते, वो है कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इंटरसेक्शनैलिटी। और इंटरसेक्शनैलिटी जो अप्रोच है वो इसी बात को संज्ञान में लेता है कि ये केवल एक आर्थिक प्रॉब्लम नहीं है, या सिर्फ एक सोसाइटल प्रॉब्लम नहीं है, केवल एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ सो मेनी डिफरेंट डायमेंशंस। तो एक ये डिफरेंट जो एक वुमन है वो अपने एक्सपीरियंस से भी वुमन है, सोसाइटी के ट्रीटमेंट से भी वुमन है, आर्थिक रूप से निर्भर रहने पर भी वुमन है, नेचुरली जेनेटिकली भी वो वुमन है, और उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसको जिस तरह से वो वायलेंस को एक्सपीरियंस करती है, जिस तरह से वॉर को एक्सपीरियंस करती है, जिस तरह से सोसाइटी के रीति रिवाजों को एक्सपीरियंस करती है, जैसे मदरहुड को एक्सपीरियंस करती है। कहने का मतलब है कि ये तमाम चीज़ें एक इंटरसेक्शनल रूप में, यानी कि एक मल्टी डायमेंशनल रूप में डिफाइन करती हैं कि असल में उसका एक्सपीरियंस और उसकी सोसाइटी में जगह क्या है। तो अगर आप उन मानकों की बात करें या उसके सूत्रों को खोजने की बात करें, तो इट कट्स अक्रॉस सेवरल फैक्टर्स। देयर इज इकोनॉमिक्स, देयर इज पॉलिटिक्स, देयर इज अ शेयर्ड historical experience, there is of course gender, I mean the biological way, and then the social construction of gender, and then there is also the psychology. जो साइकोलॉजी है, कैसे एक वुमन ही वुमन के अगेंस्ट जब खड़ी होती है, तो वो पेट्रियार्कल जो माइंडसेट है ना, अल्टीमेटली तो वो लड़ाई वहाँ की बिल्कुल है। मतलब कोई भी लेवल हो, कोई भी स्तर हो, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, या राजनीतिक हो, या और भी कोई स्तर हो सकता है, बायोलॉजिकल हो, उन सारे स्तरों पर जब महिला भी चौखंबे की तरह से होगी साथ साथ, तो जाहिर तौर पर वो समानता तब दिखाई देगी।
और तब उसके लिए कहना नहीं पड़ेगा। यशोभूमि फिर चलते हैं एक बार हमारे संवाददाता जहां सुरेंद्र कुमार मैक्सिको के चेंबर ऑफ डिप्यूटीज के अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। जैसा कि कल P20 को लेकर जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैक्सिको की चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज की स्पीकर मार्सेला गैरा। मैं उनसे जानता हूं क्या उनका रिएक्शन है उनके P20 डेलीगेशन को लेकर। मैम, व्हाट डू यू वांट टू से टू इंडिया? नमस्ते भारत। P20. Thank you. So how do you find India's visit to it? Well, I have been in India many times, but this time, today, I mean this weekend, is different. It's gorgeous because I can see and compare it. All the development that you have been got it through these few years, and that means that you are in the correct way. And I'm a very happy to be here. I'm a very happy woman, and to constatate that we have more women empowering, more women in politics. And yesterday I had the opportunity to know Mr. Prime Minister Modi, and I had a very great opinion about it. It's a very, very wise man. He's a wise man, and he's a very simple, how do you say, simple man, very close to the people. And we talked with him, all the Mexican women that came here in this summit of P20. We had a small talking with him. So it's amazing. It's a good experience. And also a good experience here is to share opinions, to share experiences with another colleagues from other 20 countries, as Mexico, as India, as as Turkey, and I mean it's a very good experience. And also P20, it's an opportunity to have the conscience that we, as a politicians, we have to look forwards to development of our responsibilities for our countries. Ma'am, you have just said about the women's. We have take the lead. As per IPU, global ratio is 24% around in women's participation in parliament. India passed a bill just and gave that 33% reservation to women. What do you think about India's step to lead? Well, I'm going to tell you something. In Mexico, we have 50. We are a parity parliament. We pass from the quotas to the parity. So now we have a chamber of 500 deputies, 500 parliamentarians, 250 women, 250 men. That means a will, a political will. And that means that all the women that we have been empowering we have been in politics, we look for to have more conditions, more equality, more prosperity. Because as Modi says, if the woman has prosperity, war will have prosperity. So how do you say about yesterday's joint statement, women-led environment, even environment about environment? Well, India let me tell you something more. Yes. But you are in the correct way. Yeah. You are on the way. Yeah. Because you have 33%. 33%. Yeah. 33%. But you have the 50% in the whole states. Yeah. That's what they tell. They told us. So you are in the correct way. And if I see all here in Delhi, and I can see also in other like South India or the other side of India like Chennai or the other one like Mumbai, we can see all the development, all the modernity, and all the attitude of the people. India has a very good people. Congratulations. Thank you. We have a theme of Vasudev Kutumbakam. It means may the world is unite. Okay, India is a collaboration of states. We have different cultures, different languages, just like world. Okay, yes. So India is taking a lead to collectively efforts for the environment. What do you think India is taking the steps?
for environment? For environment, well, environment now is everything. Climate change, we have to work all together as a family to return to against the climate change. Climate change is very dangerous for the world. Climate change is very dangerous for the earth, for our families, for our people. And then we have to take or to push policies against the climate change. And I'm sure India, and I'm sure about Mexico, we work a lot about climate change. We have a law of climate change long time ago, 10 years ago. We have been working and working. But, you know, this year was the more hot year in the whole world, in the whole history of this century and the last century. So we have to do something. And the thing that we have to do is to have the will, to have the conscience, and then the will, the political will, to have change, to transform the reality. So you understand what I mean? Yes, yes. I'm sorry about my English, but I'm a Spanish woman, I'm a Mexican, but I'm trying. Even I am an Indian and I am also trying to speak in English continuously. But you do very well. But my language is Hindi and much more proud on that. So, I like Hindi. Yes, yes. So what do you think about Modi, Prime Minister Modi's leadership? I told you, he's very strong man. He's very strong and he's very, very close to the people, and that's something, because he's a man who people loves him. It's good. I mean, people loves his prime minister. We can tell that. So he has a charm. He has a magnetism, and I think he's in the correct way of decision of the will, and just because you are growing with se llama, say in Spanish, say crecimiento con inclusión social. It's growing with social inclusion. Okay. Thank you, India. Thank you, ma'am, for your time. Quite an interesting conversation with Marcela Castillo, the president of the Chamber of Deputies of Mexico. She spoke about equality, how Mexico gives 50% reservation to women. Perhaps that is the kind of change we would also like to see in India. We are beginning, and we are on the right way, as she said. We've announced 33% in Parliament and state legislatures. Some states give 50% at the Panchayati Raj level. But the fact that we're slowly getting up there, it's being noticed by the world, being hailed. She also spoke about climate change. That's an important aspect also, wherein India has been wanting women to play a vital role. That's the question I'll take back to Dr. Nupur Tiwari. What is the kind of emphasis that that India wants, actually, women to play in building climate resilience? Because one thing that's proven is that climate change is not impacting everyone equally. It's not gender neutral, and perhaps women, young girls are impacted in a more adverse way when it comes to climate change. So how do you see women taking that central role in building climate resilience? Yeah, that if they are given a very important role by reservation, by mainstreaming them at the decision making, whether that's a national level or at the grassroots level, I'm 100% sure this particular aspect of climate change will be taken much into consideration. I'll give you one example of tribal people, as was mentioned earlier by our this one of the yeah. So women in the tribal areas are the biggest preservators, or they are the people who are preserving the forest and the environment, because the way they sustainably collect the minor forest produce, it's a very unique way. And you'll be surprised that women also marry the trees. The way they, there's all the way is still very, very sustainable in terms of collection of minor forest produce, even the processing it, and also marketing it. All the three ways I have seen, it's tremendously pro-environmental protection. So this is just one way. And if you go in the panchayat system also, they have a way by which even Swachh Bharat Mission, for instance, you say, and various other aspects you say, there's a much emphasis on the kind of a very indigenous knowledge is being used, and also indigenous way of sustaining the environment as it was, not getting very harsh on that. So this tribal women, at least I could say I've seen it,
very closely had been into 100% environmental protection. Right. Before we go back to Yashubhumi, where our correspondent Surendra has spoken to the delegate from South Africa, I'll take one question from Mr. Manish Dabare on a related topic. Mr. Dabare, you heard the Mexican delegate talk about a lot of things. She seemed to be really impressed with Prime Minister Modi's persona, his leadership, the kind of change he's brought about in India. It's important for these delegates, especially the presiding officers, the parliamentarians, to understand India's approach, to understand what India stands for and what it means when it says the world is one family. So we believe in those shared best practices, something that has helped us grow, that kind of development we would also like to see in other parts of the world. And for instance, the women-led development. To that aspect, one of the suggestions that India made at the G20 was to have a G20 working group for empowerment of women that was adopted by the leaders in the New Delhi Leaders Declaration. How significant do you think that working group on G20 women empowerment is going to be, that is going to be carried forward by Brazil in its next presidency? How do you see that strengthening India's stance of women-led development? No, I think that's a very important message. See, please understand, in fact, even yesterday, what Prime Minister Modi said during his inaugural address, that this, this is really about the India story, the India narrative. And I think that is what is coming out repeatedly in different meetings held over the entire last year. And the whole point about this women's group participation, I mean, the women's empowerment, women-led development, I think that is a very important point. And again, Prime Minister also, in fact, what was the central message about his inaugural address was that the best practices which are in different parts of the world, obviously starting with India, the whole point about women's reservation bill, I think that is a clear message. And that those sort of exposure to ideas, exposure to the leadership, what a transformation leadership can do for respective countries. I think that is the message, that is the story. The delegates who had come earlier in different G20 meetings and for the P20, I think that is the message they are taking back home. And in fact, the joint statement, which really was announced yesterday and which will be adopted today afternoon in the concluding session, I think makes it very clear that there is now a global consensus about more and more women participation in development, and obviously through in fact leadership, that the world is now, and in fact India is showing the way that the women should be actually not just, as I said, not just the beneficiaries of development goodies, but in fact should be leading that change in terms of ideas, in terms of policies, in terms of actions. I think that is a very substantive message, which in comparing it with the earlier presidencies, that a very strong focus on women issues, on gender issues, and there are many facets to it. There are obviously the discussions earlier about society, about political changes, about economic. Economic sort of participation. The Nobel Prize for Economics, in fact, one of the panelists rightly pointed out, really highlighted what sort of challenge about women labor force participation remains. There are issues of equity, there are issues of equal pay. I think this, in many ways, and I strongly believe that India is actually showing the way, and India, the people who have gathered since the entire last year, this year, in fact, are carrying back these stories of transformation, these stories of women empowerment, women-led development, and also, in fact, India also is a success story. I mean, look at, for example, especially during COVID, especially during that, you have successfully, the Indian government successfully reached out directly to the beneficiaries in multiple ways, and in fact, women were much more affected negatively. So this really, in fact, is the story which very rightly has been highlighted by the government of India under the leadership of Prime Minister Modi. Right. जी, ये नया भारत है और बदलाव के दौर से गुजर रहा है, और ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, किस तरह से भारत दुनिया के एक बड़े धड़े का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। और इसी बीच हम फिर से एक बार यशोभूमि की ओर चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के चेयरपर्सन से बातचीत की। आइए सुनते हैं।
P20 सम्मेलन के दौरान इस पर बात करने के लिए साउथ अफ्रीका की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस के स्पीकर आमोस सर। मैं उनसे जानूंगा उनका क्या रिएक्शन है भारत में आने को लेके। सर, हाउ डू यू फाइंड इंडियाज विजिट? Namaste Bharat P20. Thank you very much for the opportunity. The visit is really excellent. We've had here an opportunity to engage on issues, and clearly the spirit is very positive, and one is confident that we'll continue to strive together and seek to improve the quality of life of people. So, what is your reactions about yesterday's joint statement in P20 yesterday? We broadly in agreement. We're finding one another, and indeed it's clear that the theme of the conference that speaks to one earth, one family, one future is something that finds resonance amongst all the delegates who are participating in this conference. So how do you find Parliament's role in one earth, one family, one future? How do you think about that? Parliament's role is important, or how do you? Parliaments are very, very important. The heads of states having agreed on certain specifics gives us an opportunity as the different legislatures and Parliament to pursue issues of development in keeping with what parliaments are meant to do. And briefly put, those responsibilities include making laws. It includes holding governments and heads of states accountable, and ensuring that there's a meaningful oversight that's being exercised. It means remaining representative, and therefore having people at the back of their minds, of our minds, all the time, as we deliberate and grapple with the issues. It also means parliaments across the world building good relationships amongst themselves, what we refer to as parliamentary diplomacy. It also means the parliaments that exist should more and more become activist parliaments, parliaments that are in touch with people, parliaments that are grappling with issues that people are experiencing on a day-to-day level, and therefore acting within the experience, the lived experience of people. So how do you find Prime Minister Modi's role as emerging leader of world? We are doing everything to protect our environment. India is taking lead. What do you think about the lifestyle for environment? We are doing from last many years. What do you think the global leaders to come together for that particular thing? The Prime Minister of India occupies a very important position, especially in relation to the BRICS countries. Now we know, of course, that it's no longer just Russia, India, China, Brazil, and South Africa. We know that countries such as Iran, and now Egypt and so on, have become part of BRICS. So the BRICS family is growing, and the kind of leadership that is being provided gives more impetus to progressive development agenda. It also gives impetus to the kinds of interventions that the world requires. So every step of the way,
every progress that is being made reflects the kinds of development that the developing world is looking at. For instance, I mean, if you look at India landing on the dark side of the moon and those kinds of things, those are positive messages because science is not science for its own sake. Science is meant to be in the context of improving the quality of life of people. So thank you very much for sharing your experience, your all over things. Thanks for talk to Sansad TV, sir. यशोभूमि से